Friends, it is indeed my pleasure to introduce Shri Satish Marathe ji, a well-known personality in the banking space. His achievements in the past are well known to all of us. But the core behind all that is the friend, philosopher, and guide that I've seen in him during my several interactions with him. I think he has unlimited passion and an unstoppable commitment for the betterment of society and the financial sector. Satish ji, we all eagerly look forward to your guidance to the banking community that is present here. नमस्कार आदरणीय रूपाला जी, ज्योतिन्द्र भाई मेहता, देवड़े साहब, दास साहब, हमारे दिल्ली के रिजर्व बैंक के हमारे पुराने मित्र अरोरा जी और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं जब आपके सामने कुछ विचार रखने जा रहा हूं, एंड सिंस द ऑडियंस इज ऑल इंडिया, आई विल मेक माय व्यूज address my views and address you all in both a combination of Hindi and English. So आप मत बोलिए कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ. भारत की सहकारिता बहुत बड़ी है, हम सब जानते हैं. आज के दिन में we have 28 crore members और we have more than 8.5 lakh cooperative societies. Roughly 25% of 8.5 lakh societies are engaged in thrift and credit. They may be banks, they may be primary credit societies, they may be district banks or state cooperative banks, and in some cases multi-purpose cooperative societies, और कुछ स्थानों तक तो प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज भी ये फाइनेंशियल सेक्टर का काम करते हैं. आज के दिन में जितना महत्व कोऑपरेटिव सेक्टर को देने की आवश्यकता है, उतना उसे अब तक इम्पोर्टेंस प्रदान नहीं किया गया है. फोकस केवल अर्बन बैंक्स के ऊपर, कुछ मात्रा में जिला सहकारी बैंकों के ऊपर और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पर हैं. बट यदि हम इफ वी लुक टू दिस सिनेरियो, we will realize that we have good, vibrant, profitable PACs, primary agricultural societies, numbering about 65,000. इतने ही एक्टिव हमारे पास लगभग 1,40,000 प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज, 1,40,000 प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज जो एक्टिव और वाइब्रेंट हैं, प्रॉफिटेबल हैं. Some of them are multi-purpose societies. और NDDB का जो विचार है, the way NDDB is thinking, National Dairy Development Board, कि these societies, primary milk societies, should now be gradually converted and take up multi-purpose activities. और 1,00,000 से अधिक, more than 1,00,000, we have cooperative credit societies, almost 50% of them in semi-urban rural areas. तो इन सब की यदि हम संख्या करते हैं तो प्राइमरी फाइनेंशियल सेक्टर में ये छोटी संस्थाएं भी बहुत बड़ा काम आज के दिन में कर रही है. पिछले कुछ वर्षों से, फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, इन द प्री बजट मीटिंग्स, वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, we have been requesting the regulators कि ये जो हमारी प्राइमरी यूनिट्स हैं, even though they are strictly not banks or regulated entities by the RBI, नॉर्म्स के आधार पर और जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रेडी, उनको नेशनल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बना लेना चाहिए. इट इज वेरी नेसेसरी that these societies should become a part of our payment system. जब वो part of payment system बनेंगे
तो ऑब्वियसली रिस्क कम होगा। साथ साथ हम जो पूरे देश में एक रूरल सेक्टर को अपने नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की बात करते हैं, उससे एक बहुत बड़ी गति आएगी। विल स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये निश्चित है। और साथ साथ आज भी जो हमारे देश के लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा हमारे बहनें और भाई हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े नहीं हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ सकेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक बहुत बड़ी देश के विकास के लिए आवश्यकता है। और भी एक मैं विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आपने यदि नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद, जो मेंबर एग्रीकल्चर हैं नीति आयोग के, उनके पब्लिकेशंस पढ़े, उनके स्पीचेस सुने, तो दो चीज़ों का आपको ध्यान में आएगा। नंबर वन, the income levels or the pattern of income in rural areas has undergone a substantial fundamental change in the last 25-30 years. Farm income is just 35% and non-farm income is almost 65%. तो ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को देखते हुए हमें हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बिजनेस मॉडल्स हैं, we need to have a relook at those existing business model plans, business patterns, और नई ओर से with a new thinking we need to formulate plans, give guidelines and give more, I would say, operational freedom to cooperatives in rural India to support the huge emergence of non-farm sector, which accounts, as I mentioned, for 65% of the rural income today. साथ साथ ये भी मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हर बार अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सामने आता है, द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and mass migration that is taking place from rural India to urban area. To some extent, I agree and I believe that is migration is necessary, but not the way that it is happening today. यदि हम हमारे फाइनेंसिंग पैटर्न को एक री इन्वेंट करते हैं, री एनर्जाइज करते हैं, then I believe a lot of income earning opportunities can be created in rural India. आज के दिन में मैं मानता हूं कि द फोकस टुडे इज जस्ट ऑन प्रोडक्शन, और हम जो बैंकों की ओर से ग्रामीण इलाकों में फंडिंग करते हैं is only for in the form of crop loans primarily. I'll not say it is not done for other, but primarily हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन में हमारा फोकस है. If we look to Southeast Asian countries, if we look to Europe, if we look to other developed countries, the focus has shifted from production to substantially processing of agro produce. अपने देश में, भारत में, the processing of agri produce is just 20%, and that too is restricted to a few crops, say cotton, jute, oilseeds, sugarcane, and a few others. But a vast variety what we produce is not being processed. As a result, there is huge loss due to wastages. तो हमारे देश में आज ज़रूरत है, we should focus on agro processing. Agro processing will result in increased shelf life, creation of warehouses and storage of processed
agri produce. This will lead to farmers getting finance against the goods kept in the warehouse, and release of these processed agri produce when the market needs it, resulting in price stabilization and indirectly also contributing substantially to containing inflation. आपने इस साल हमने देखा पर्टिकुलरली इन कोविड टाइम्स ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ रीजन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया and the inflation rates were very high for almost 13 months. Only last month figures indicate that the inflation is now range bound after a very long time. It is something like 4.50% of for CPI. तो हम चाहते हैं कि रूरल एरियाज में कॉपरेटिव्स कैन प्ले a very big role, not only in processing but also in warehousing, transport, opening of our retail outlets, and also this will give a big boost to income earning opportunities and employment. In India, typically, we always hear we have more than 10 crore youth seeking employment. As we understand employment, हम जिस पद्धति से एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि सुबह 10 से 6 बजे तक मैं काम करूं या सुबह 8 बजे की शिफ्ट से 4 बजे तक और फिर सेकंड शिफ्ट में और एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल गेट ए सैलरी, इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट विश्व भर में बहुत मर्यादित हैं. दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लिमिटेड द वर्ल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. It is estimated that such employment is only 18 to 20%. And if that is the situation across the world, even in developed countries, then there is no chance that this type of employment will be very high in our country. Government, be it of any party, will not be able to provide employment in as in government service or in PSUs or in government owned companies and solve the problem of unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो रूरल सेक्टर में जो हमारे यहाँ इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं उसी के तरफ हम लोगों को कंसंट्रेट करना होगा. और वी नीड एन इकोसिस्टम which will support all such income earning activities by proper financial linkages. My feeling is that the cooperatives are the best vehicles for this type of activities, and this is also going to address many of our problems. This will also result in one more aspect: investment in rural areas. Today, if I have to refer to Niti Aayog, you will notice that by private sector it is just 2%. State and central governments together invest about 17 to 18%, and the balance 80% is financed by the farmers themselves. Now, if you analyze here, who are the farmers? ये कौन किसान है जो 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आपको ध्यान में आएगा इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो बड़े लैंड होल्डिंग रखने वाले किसान हैं वही करते हैं, एंड दे आर एंगेज इन प्रोडक्शन और कल्टीवेशन ऑफ एग्जॉटिक कैश क्रॉप्स मेनली. तो हमारे यहाँ जो एवरेज पर हेक्टेयर होल्डिंग है, 1 हेक्टेयर का होल्डिंग हमारे किसानों के पास है, छोटे किसान हैं, दे डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स मच. इस प्रकार से यदि हम कॉन्सेंट्रेट रूरल इंडिया के ऊपर करते हैं, हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा प्राइमरी कोऑपरेटिव्स का यूनिट है उसको हम नेशनल पेमेंट सिस्टम से जोड़ते हैं, एंड आगे जाकर ऐसी संस्थाएं जो रूरल
लोकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आज भी ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम में आई नहीं है, उसको लाने वाले ये प्राइमरी संस्थाओं जो डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं ऑन ए नॉर्म्स बेस्ड सिलेक्शन, यदि हम डिपॉजिट इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था करते हैं, जो नोटेड इकोनॉमिस्ट खुशरो साहब ने बहुत वर्षों पहले हमारे यहाँ रिकमेंड किया था कि पैक्स जो भी डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं, दे शुड बी गिवन ए कवर ऑफ 50,000 रुपीज। इवन इन ए डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस, उनके यहाँ देर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग एजेंसीज। It is now time that we also should examine the deposit insurance coverage रूरल इंडिया के कॉपरेटिव्स को पर्टिकुलरली कैसे हम दे सकते हैं, एंड इट नीड नॉट बी ऑलवेज ए रेगुलेटेड एंटिटी by Reserve Bank of India. It could be some other regulatory authority which decides to whom the insurance cover is to be given. तो मैं आप सबको विनंती करता हूँ, विचार करने के लिए विनंती करता हूँ कि लेट अस लुक टू cooperatives for regenerating our rural sector. We also have to concentrate on urban India which is poor. और यहाँ मैं मानता हूँ कि हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली हमारी जो अर्बन एरियाज में टायर वन कैटेगरी की जो अर्बन बैंक्स हैं, दे कैन प्ले ए बिग रोल. We don't have to remain small. Urban cooperative banks don't have to remain small. That thinking that we are small, we have limited resources, मैं मानता हूँ we have to come out of this mental setup. Recent changes in the Banking Regulation Act has is going to provide us huge opportunities for growth. Even tier 1 banks, if they plan it out properly, I am sure they can grow, they can be a formidable force in urban areas serving the urban poor. हम सब यदि हम प्रयास करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम अच्छी मात्रा में कर पाएंगे. और इसीलिए मैं सबको आह्वान करता हूँ, आप सबको मैं अपील करता हूँ कि ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड prepare a vision document for itself spanning of at least 10 years and review the progress every 2 years and then reset the goals if necessary. बट हम कहाँ जाएंगे, कौन से एरियाज में हम काम करेंगे, फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज इंस्टीट्यूशन के रूप में परमानेंटली हम कैसे रहें, वेल कैपिटलाइज हम कैसे रहें, इसकी बहुत आवश्यकता है प्लानिंग होने की, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की. साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली मैं स्टेट गवर्नमेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने प्रदेश के विकास में कोऑपरेटिव्स कैन प्ले ए बिग रोल. बहुत बार लोगों का एक इम्प्रेशन है कि कोऑपरेटिव्स आर ओनली इन ए फ्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु or United Andhra that we know. But believe me, from Kutch to Nagaland and from Ladakh to Andaman Nicobar Islands, everywhere there is a setup of cooperatives in the country. 75% of the rural households, survey has shown, are covered by the cooperative institutions. And I would also say that 100% villages, maybe a cooperative covers 4 or 5 villages at that, but 100% villages get covered by the cooperatives with proper induction of technology, capacity building, modernization of our existing laws, and if we all work with a common goal under a national vision, I am sure we will soon achieve not only a $5 trillion economy's dream, but we'll exceed it. In the very near future, Indian economy will emerge as the third largest economy in the world.
Of course, the difference between our economy in size and that of China and US will be substantial, but this century is of Asia, and Indian economy is bound to contribute substantially, and we are sure to emerge as a strong economic power in the world, supporting a host of countries across the globe. मैं हमारे सभी कोऑपरेटर्स को विनंती करता हूं, एक लार्जर विजन, एक लार्जर पिक्चर और ग्रामीण इलाकों की परिस्थिति हम पूरी बदल दें, जिस पद्धति से हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर कलाम सोचते थे कि जिस प्रकार की फैसिलिटीज सर्विसेज और जिस प्रकार की सुविधाएं शहरों में हैं, वो सब प्रकार की सुविधाएं और आवश्यकताएं हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में भी हम उपलब्ध करें। ये करने में मैं मानता हूँ कि कोऑपरेटिव्स का योगदान बड़ा होगा, और आज भले ही देर इज नो टॉक ऑफ स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, a time will come when we will not only shift the gears and start concentrating and building हमारे यहाँ स्मार्ट विलेजेस। पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए a total new approach is being considered. These days we don't hear much about finalization of plans for construction of dams or creating new canals in the country. The focus has shifted after a lot of research that water has to be stored where at the village level, and distribution of water resources at the village level is the best way forward. मैं मानता हूँ इस सेक्टर में भी कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छा काम कर सकती है, वाटर रिसोर्सेस को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। If in a city like Silicon Valley in America, a cooperative can manage the water resources and distribute it, it is certainly possible that हम विलेज लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पानी के समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। मैं इसी आशावाद के साथ विद कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड द कोऑपरेटर्स, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब एक साथ विचार करके काम करते हैं, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं तो भारत का एक चित्र हम पूरा बदल सकते हैं। पावर्टी लेवल्स जो हमारी है वो डेफिनेटली बहुत मात्रा में हम कर पाएंगे, और आज जो हमारे ग्रामीण इलाकों में हर एक रूरल हाउस होल्ड का मंथली इनकम जो केवल 8,000 रुपया है, वो कई गुना अधिक हम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू बैंकिंग फ्रंटियर्स फॉर inviting me to share my thoughts. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Satish ji. As always, your words generate not just ideas in the mind, but also feelings in the heart. Thank you very much.